अस्सलाम वालेकुम। आजकल सियासत की गरमा-गर्मी है और हर जगह सियासत की बात हो रही हो, चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। जब सियासत की बात होती है तो हमारे पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी या साउथ एशियन जितने भी लोग हैं वो सियासत से दूर नहीं रह सकते हैं। कहते हैं ना कि सियासत हमारी ब्लड में है और सियासत में बात करना, सियासत को डिस्कस करना ये एक हमारे मशागिल में से एक मशागिल है। पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो या साउथ एशियन जितने भी लोग हों, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी क्रिकेट के बाद मेरा ख्याल से सबसे ज़्यादा इनका जो फ़ेवरेट टॉपिक होता है वो सियासत ही होता है और सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आम लफ्ज़ों में देखा जाए तो सियासत को हम लोग अच्छा नहीं समझते कि यार ये सियासत ऐसी चीज़ है, सियासत ने हमें लड़वा दिया है या सियासत ने हमें ये कर दिया। लेकिन हकीकत में सियासत बहुत खूबसूरत चीज़ है। सियासत पे अगर आप आते हैं तो आपको अल्लाह ताला जो है अगर आपका चुनाव करता है और आप जो है मुंतखब होते हैं इलेक्शन में तो आपके पास अच्छा मौका होता है कि आप अपनी कम्युनिटी की, अपने लोगों की जो है खिदमत करें। बहुत सारे लोग दुनिया में आए और बहुत सारे लोग दुनिया में चले गए, लेकिन वो तमाम लोग जो हमसे पहले थे, जिन्होंने अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ न कुछ किया, तो वो लोग अभी भी याद किया जाते हैं। अगर मैं हम बात करते हैं पाकिस्तान से तो द ग्रेट मोहम्मद अली जिन्ना, तो ग्रेट मोहम्मद अली जिन्ना को अगर हम याद करते हैं, वो लीडर तो हैं, लेकिन वो सियासी लीडर थे ना, उन्होंने सियासत में आके जो है एक स्टेप आगे लिया और उसके बाद जो है आप देखते हैं कि पाकिस्तान बना। अगर हिंदुस्तान की बात करते हैं तो द ग्रेट गांधी जो है वो भी एक सियासी लीडर थे, उनके अपने कुछ रूल थे कि क्या करना है और एक हिंदुस्तान के अलग प्लेटफॉर्म थे। इस तरह बहुत सारी दुनिया में लोग हैं। पूरी दुनिया की अगर देखा जाए तो सियासत जो है वो ज़रूरी है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर हम लोग आजकल पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी की जो उर्दू बोलने वाले हैं, समझने वाले हैं, अगर उनको हम मिसाल देना चाहें कि अरे लीडर कैसा होता है, तो कुछ लोग जो है हर तरह की मिसालें दे रहे हैं और उसमें कोई शक भी नहीं है। लीडर जो है बहादुर होना चाहिए, उनको सेंस होना चाहिए कि हमारे इश्यूज़ क्या हैं और उस पे हम लोग काम क्या करना चाहते हैं और हमें करना कैसा है। सिर्फ़ आके नारे वगैरह तो अब नहीं चल सकते। ख़ास तौर अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में तो आपके नारे-वारे नहीं चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा भी नहीं होता कि आप पड़ोसी मुल्कों पे इल्ज़ाम लगा दो और इलेक्शन जीत जाओ। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा भी नहीं होता कि आप रंग नस्ल का नारा लगाओ, मज़हब का नारा लगाओ और आप इलेक्शन जीत जाओ, नहीं। ऑस्ट्रेलिया में ये होता है कि आप जो है यहाँ पे अगर आप कुछ डिलीवर कर रहे हैं, तो लोग चाहते हैं कि यार ये ही हमारे जो है लीडर, ये हमारे कुछ करना चाहते हैं। आज हमारे जो सियासत पे जो टॉपिक है विक्टोरिया में कौंसिल इलेक्शन 2020 3-4 साल के बाद जब इलेक्शन आते हैं, तो हर कोई एक्टिव हो जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको नज़र आ रहे होते हैं। कभी-कभी मुश्किल हो जाता है कि हम किसको जो है इंतखाब करें, किसको अपने वार्ड का जो है कौंसल बना लें और कभी-कभी ये भी होता है कि जिन लोगों को अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा होता, पूरी लाइफ में कभी उसकी शक्ल नहीं देखी होती और इन दिनों वो हर वक़्त आपको फ़ोन करता है, हर वक़्त आपको पूछता है और वो इसलिए पूछता है कि उनको वोट चाहिए होता है और वो कुछ लोग जो है काबिल भी होते हैं, लेकिन अब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, वोट कहते हैं ना वोट एक जादू है, अगर मैंने आपको ये वोट दे दिया तो आप गायब हो जाओगे। तो अब इस सारी बातें हम करेंगे कि ये वोट के बाद ये कितने गायब होंगे अगर ये जीत जाते हैं और अगर ये हार जाते हैं, उनके बाद इनके बर्ताव कैसे रहेगा? क्या ये उतना ही टाइम देंगे जो अभी दे रहे हैं, जो दिन-रात जो है रात की 12 बजे हो, 1 बजे हो, मैसेज कर दो मैं प्रॉब्लम है, वो सारे काम छोड़ के पहले-पहले आपकी बात सुनते हैं क्योंकि ये वोट है ही ऐसी चीज़। बहरहाल मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है कि आज चलो कुछ न कुछ हो रहा है। आज हमारे जो कैंडिडेट्स हैं 3 कैंडिडेट्स हैं हमारे, एक कैंडिडेट्स हमारे जो हैं वो शेफी वार्ड से हैं, एक कैंडिडेट हमारा जो है वार्ड्स वार्ड से हैं और एक कैंडिडेट हमारे नॉर्थ ईस्ट वार्ड से हैं। अगर आप इन सबब में हैं, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा मौका है कि आप इनसे क्वेश्चन करें थ्रू कमेंट्स, थ्रू मैसेज और जो भी आपके ज़हन में क्वेश्चन है, आप पूछ लें क्योंकि वोट देना जो है इस्लाम में वोट देना, बैत करना अगर आपने गलत आदमी को वोट दिया या गलत पर्सन को वोट दिया, जब आप इस दुनिया से चले जाएँगे और जब आपके से सवालों में से बहुत से सवाल होंगे, आपने दुनिया में क्या-क्या काम किए। अच्छे काम किए होंगे तो इनाम मिलेगा, बुरे काम किए होंगे तो सज़ा मिलेगी, लेकिन बुरे कामों में बुरे बंदे को इंतखाब भी करना है। वोट एक अमानत है और इस अमानत को जो है आप अच्छे राइट पर्सन के लिए जो है आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप चूज़ करें। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा आपका रिश्तेदार है, जो आपका रिलेटिव्स है, आप उसी को वोट दें, जो आपका दोस्त है उसको वोट नहीं, नहीं। आप समझते हैं कि यार ये बंदा मेरा दोस्त नहीं है, ये बंदा मेरी कम्युनिटी का नहीं है, ये बंदा मेरी लैंग्वेज नहीं बोलता, लेकिन ये बंदा राइट पर्सन है इस चीज़ के लिए, तो आप उनको ही वोट दें। और वोट कैसे देना है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये अभी एक चलते हैं हमारी जो अ, विक्टोरिया इलेक्शन कमीशन ने जो एक खूबसूरत सी वीडियो भी बनाई है कि आप वोट किस तरह कास्ट करते हैं। इसके बाद फिर आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे आज के कैंडिडेट से। चलते हैं। Hi, I'm Jess from the Victorian Electoral Commission, or VEC. The VEC runs local council and state elections in Victoria.
It's important to vote to ensure your voice is heard by those who make decisions about things that affect the way you live. Local council elections will take place across Victoria this October. The elections will be held by post for all councils except Casey and Whittlesea City Councils and South Gippsland Shire Council. These three councils are currently under administration. Ballot packs will be mailed to everyone on the voters roll for the council elections from the 6th to the 8th of October. Your council pack will look like this and will have the VEC logo on the envelope. Unless you're on the voters roll for Melbourne City Council, in which case you'll receive this slightly larger version. In the ballot pack, you will find candidate statements attached to the ballot paper, voting instructions, a ballot paper envelope with a flap, and a reply paid envelope. In the metro areas, there will also be a multi-language leaflet. You separate the ballot paper from the candidate statements and consider the statements. Further information and contact details for the candidates can be found on the VEC's website, vec.vic.gov.au. Once you have considered who you wish to vote for, complete the ballot paper by putting a number 1 in the box next to the candidate you most want to win. Place a number 2 in the box next to your second choice and keep numbering all the boxes in order of your choice. Be careful to use numbers only and not accidentally repeat any number twice. Place the completed ballot paper in the ballot paper envelope, that's the one with the flap, and seal it. Then fill out your details on the flap and sign and date it. We remove the flap when we receive your vote back and use those details to mark you off the roll, so it's important to ensure you complete the ballot paper envelope addressed to you. Place the ballot paper envelope into the reply paid envelope and get it into the mail as soon as possible. It's really important that you complete and return your vote promptly, as it must be in the mail or hand delivered to the election office by the close of voting at 6 p.m. on Friday the 23rd of October. As Australia Post collection pickup times vary across the state, it's a good idea to check with your local postbox for collection days and times. An even better idea is to get it posted as soon as you can, so you don't need to worry about the collection times at the last minute. Now, if you're on the roll for the Melbourne City Council elections, you'll receive 2 ballot papers. The small pink ballot paper is for the election of the leadership team, which consists of the Lord Mayor and the Deputy Lord Mayor. There will also be a booklet for the leadership team containing candidate photos, a team statement, and the indication of preferences. The larger blue ballot paper is for the election of 9 councillors. There will be a group voting ticket booklet with voting instructions, candidate photos and statements, a ballot paper envelope with a flap, and a reply paid envelope to mail it back. You should consider the statements from the leadership team candidates and those of the councillors too. As always, some further information is available on the VEC's website in the form of statements, responses to the questionnaires, and contact details. जी, आपने वीडियो देख ली और अभी तो मेरे ख़्याल से कि आपके लिए कितना आसान हो गया होगा कि अपने कैंडिडेट्स को किस तरह जो है आप वोट दे सकते हैं और जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जो आप लोगों के कैंडिडेट्स जो आपके वार्ड के कैंडिडेट्स हैं, तो आप उसको प्रॉपर जो है मतलब थ्रू इस जो भी आपको बताया गया है नॉलेज में कि आप नंबर 1 सेलेक्ट नंबर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे अभी जो ज्वाइन की है शेखी वार्ड से और शेखी वार्ड से जो हमारी आज की कैंडिडेट है महक शेख 24 इयर्स ओल्ड है और 2012 में जो है ऑस्ट्रेलिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2012 में ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर चुकी हैं अपने वालिदैन के साथ। उनके बाद फिर मुख्तलिफ इनकी जो जर्नी रही है वो लोकल जो कम्युनिटी वर्क्स है उनमें काम कर चुकी है, स्टूडेंट के लिए भी काम कर चुकी हैं और मुख्तलिफ कम्युनिटी से इनका वास्ता है। और उस वक्त जब एक काम करते रही 6-7 साल, उन दौरान इन्होंने जो है बहुत कुछ सीखने को भी इनको मिला होगा और मेरे ख्याल से कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन में ही जो है इलेक्शन के लिए जो है पार्टिसिपेट करूंगी और मैं कैंडिडेट बन के सामने आऊंगी। और अगर इन्होंने ये बात सोची भी होगी या डिस्कस भी किया होगा तो उनके वालिदैन ने कहा कि अब आपकी उम्र नहीं है, ये एज आपकी नहीं है, अब आप थोड़ा स्टडी करो, ये करो। लेकिन क्यों उन्होंने इलेक्शन का जो है इंतखाब किया और ये क्या करना चाहती है, सारे हम बात करेंगे महक से। और महक ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम महक। महक हाल से थोड़ा सा That's okay. Walaikum salam. Thank you so much, Sajid, for having me.
welcome to the show, and it's the first time you're being here, and especially for me, all our followers, they always ask about the how old is she? I think 24 years old. Yes, that's correct. I turned 24 this year, so just 24. So I think you will be the youngest candidate in all this campaign, if I'm not wrong. In my ward, I'm the youngest, but I definitely know other younger people than me, even younger than me, who are running in different wards. So definitely, I encourage people to check, and support the young people in their own councils as well. Good. So good luck for that. But first, for our listeners, can you do a briefly your introduction and about your journey and why do you want to be participate the candidates for the council election? Yeah, of course. Thank you, Sajid. I just want to start by saying that, I want to acknowledge, Kay, I'm joining everybody from the lands of the people of the Kulin Nation. I think it's very important, Kay, jo bhi hum kaam kare, advocacy may, council may, we must kind of involve the First Nation communities and work with them together. So I just want to start by acknowledging that. I also want to acknowledge my ancestors. I come from a long line of advocates, a long line of community members. So just pay my respects to my own grandparents and my own parents who have supported me to come here. So my name is Mehak. मैं Wyndham City Council say standing for elections in the Shefi ward. Shefi ward covers Werribee, Hoppers Crossing, and Tani. I have been involved in community work for the past 8 years. You're correct, Sajid. I came to Australia in 2012, and I started in 2012. Actually, 1 month after we came to Australia, we started volunteering with the local community center. So that's where my journey started. I was doing classes for children after school. I used to go to the community center and do games classes for little children aged 6 to 12 because I didn't actually have anything else to do, but I wanted to support and give back to the community, that welcomed my family and I and gave us a home. So that's where I started. And then I got very involved in youth advocacy, trying to raise the voice and the issues young people are facing. I also got involved in women's rights issues and women's safety issues. So I think that's what I've been doing for the past 8 years. My career as well is in advocacy. So I studied psychology. If anyone is interested, my background is in understanding people, understanding the brain. But I am working in social impact, in trying to create a better world in different ways. So that's my journey. Yeah, thank you, Sajid. मेरा final message ये है कि लोग, really सोच के vote करें. Like, do your research, which Dipti has already said. But really think about representation. Think about diverse representation, not only ethnicity but diverse age representation. Often हमारे young people जो है हमें भूल जाते हैं लोग. Like, we are also part of this community. Please ensure that our voices are also there. So ensure that diversity. I also want to let people know, okay, getting involved in local politics, in local civic engagement is so important. I have come from countries where you don't have a say, you don't have a voting right, and this is an important right that we can use to actually represent the kind of and create the world we want. You're already thinking about, you want a world where everyone is valued, you want a world where the environment is looked after. So put the people who also believe in these values, like myself, into that position and vote one before 24th October. Number all the boxes. Someone was asking me about preferential voting recently, and my views on it. To be very honest, if you don't vote all the boxes, the vote is not valid. So you have to vote, put all the numbers in, and please get in touch. If you have an issue you want to raise and you haven't had a chance to talk about it, get in touch with the candidates. I run a series called In Conversation with Citizens, so you can actually talk for yourself. You can come and tell me the issue, but you can also talk for yourself. I'm not here to talk on your behalf. I'm only here to be a platform so you can be heard. That's my message for my ward constituents. थैंक यू वेरी मच महक, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और जैसे आपने जिक्र किया कि लोग हमें भूल जाते हैं, तो इंसान को बड़ा बेवफा इंसान भूल जाता है, लेकिन आपके काम जो है, कभी अगर आप ऐसे कोई काम करो तो दुनिया आपको याद रखे। तो गुड लक आपके लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप जो है आगे भी अपने जो भी आपकी गोल्स हैं वो अचीव कर लें। थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए।